Hi dear students, very good evening to all of you. Today we will discuss new entitled theme, environmental factor influencing learning. As we know that environment plays important role in order to shape the behavior of an individual. According to the father of behaviorism, namely J.B. Watson, give me 1 dozen of healthy children, I will make them whatever you want. Child becomes doctor, engineer, thief and vagabond. It means it is the environment which will decide the behavioral modification and behavioral change in the child. Dear students, as we know that learning itself is the process of acquiring new knowledge, learning skills, attitudes, and behaviors. A child starts to learn after the birth when comes contact with physical and social environment. Dear students, there are the various prominent factors which influences the learning. Number 1, social environment. As we know that social environment includes home environment, school environment, by and large society environment. These are the 3 environments which decides the path of the learner or individual. Dear students, जैसे कि हम जानते हैं अगर होम इन्वायरमेंट अनकंड्यूसिव होगा, अनहेल्थी होगा, वहाँ पर बच्चे की लर्निंग सही नहीं हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, होम में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है, होम में फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉन्फ्लिक्ट among the family members, conflict in between the husband and wife, conflict on the basis of property issues या conflict poverty की वजह से है. And these all types of conditions affects the learning of the learner. जब तक कि home environment conducive नहीं होगा, बच्चे की learning possible नहीं है. And apart from the home environment, dear students, school environment and social environment also plays very important role. For example, school environment includes infrastructure, facilities availing in the school plant. अगर facilities available नहीं है या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, वहाँ पर बच्चे की लर्निंग पे असर पड़ता है. या स्कूल जो है वो सही लोकेशन पे नहीं है, यानी कि बच्चे को स्कूल बहुत दूर पड़ता है, या स्कूल हिली एरियाज में पहाड़ पे बनाया गया है, या स्कूल जो है मार्शी लैंड में बनाया गया है. These are the various obstacles and hindrances which comes in the way of learning. या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सही नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को नहीं मिलती है, इसकी वजह से भी लर्निंग पे असर पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ 10 या 20 साल पीछे जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स में लड़कियों का इनरोलमेंट रेशियो कम होता था एज कंपेयर टू द बॉयज. और इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स में वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो लड़कियां होती थी, गर्ल चाइल्ड होता था, फील्स इनसिक्योर इन द स्कूल, या स्कूल्स में टॉयलेट फैसिलिटीज़ और अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी. ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इज़ द एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्कूल. प्रोविजन फॉर द co-curricular activities is the essential component of the school. And infrastructure is another important factor which influences the learning.
यानी कि क्लासरूम और क्लासरूम्स का साइज और उनकी वेंटिलेशन या कंप्लीट हाइजीन एंड अपार्ट फ्रॉम इट मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज विच ought to and must avail in the स्कूल। और ये सब फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि सोसाइटी का सवाल है, अगर सोशल इन्वायरमेंट, आई मीन टू से यू कम्युनिटी बेस्ड इन्वायरमेंट भी हेल्थी नहीं होगा, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेलिंग इन द वेब ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द बेस ऑफ कास्ट है, कलर है, क्रीड है, सेक्स है, तो ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एक लर्नर की लर्निंग पे। नाउ नंबर सेकंड, न्यूट्रिशन। Dear students, nutrition includes the healthy diet. There is strong affinity between the learning and the diet. अगर बच्चे की सेहत कमज़ोर होगी, directly it influences the health of the learner or child. Dear students, as we know that deficiency of iron decreases the dopamine and it finally affects the cognition of an individual. जैसे कि हम सब जानते हैं, dopamine is basically the neurotransmitter. As we know that neurotransmitters are chemical substances which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. अगर हमारे ब्रेन में यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शन स्टॉप करेंगे, उससे हमारी कॉग्निशन पे असर पड़ता है। और डोपामाइन कब एबनॉर्मल फंक्शन करता है या उसकी फंक्शन में कब प्रॉब्लम हो जाती है? व्हेन वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो उससे डायरेक्टली असर डोपामाइन पे पड़ता है। Deficiency of vitamin E, B, iodine, zinc and minerals. These also affects the mental concentration. Dear students, जहाँ तक कि mental concentration का सवाल है, हमारी mental concentration तब बरकरार रहती है अगर हमारी बॉडी में नॉर्मल क्वांटिटी में विटामिन ई है, विटामिन बी है या आयोडीन है, जिंक और मिनरल्स है। इनकी कमी की वजह से डायरेक्टली हमारी कंसंट्रेशन पे असर पड़ता है, यानी कि वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट व्हेन वी possesses deficiency of these. Number third, daily exercise. Dear students, daily exercise is the another third important factor which is responsible for the learning. As we know that good health is not possible without the physical activity or exercise. Physical exercise is not only that to play any particular game. Physical exercise होती है अगर आप किचन गार्डन का काम करोगे। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप डोमेस्टिक वर्क करते हो एग्रीकल्चर के साथ, वो भी एक किस्म की फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आप घर में बर्तन मांजते हो, वो भी फिजिकल एक्सरसाइज है। अगर आप कपड़े धोते हो, यू आर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ये भी एक फिजिकल एक्सरसाइज है। और अर्ली इन द मॉर्निंग जॉगिंग पे निकलना, ये भी फिजिकल एक्सरसाइज है। हेल्थ क्लब जाना, आई मीन टू से यू फिटनेस क्लब जाना, ये भी एक फिजिकल एक्सरसाइज है। या कोई सपोर्ट्स गेम खेलना, ये भी फिजिकल एक्सरसाइज है। और एक इंडिविजुअल को फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी करनी चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन हम में फिजिकल एक्टिविटी की होनी चाहिए, अदरवाइज इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ। डियर स्टूडेंट्स, physical exercise improve our brain development. It increases the attention span and also makes our nerve cells healthy, improves
मेमोरी, चाहे वो मेमोरी ऑफ रिटेंशन है या मेमोरी ऑफ रिकॉल है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, फिजिकल एक्सरसाइज के बहुत से फायदे हैं डियर स्टूडेंट्स, लाइक इट हेल्प्स टू रिड्यूस द एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, जो भी ये प्रोमिनेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, इनको हम फिजिकल एक्सरसाइज से यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज व्हाई वी हैव टू गाइड द लर्नर्स प्रॉपरली to engage with different types of physical activities in order to promote the good health and also to promote the healthy learning. Dear students, physical activity के अनगिनत फायदे हैं। जो हमारा ब्रेन है उसमें नॉर्मली ऑक्सीजन फ्लो हो जाता है, एंड व्हेन देयर इज नॉर्मल फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इट रिजल्ट इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ neurotransmitters, यानी कि as we have already discussed, neurotransmitters are responsible for the development of our cognition, और फिजिकल एक्टिविटी करने से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में है ये फंक्शनल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर इन द फॉर्म ऑफ डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, एपिफेराइन, and there are other neurotransmitters which carry the message from one nerve cell to the another nerve cell. And finally, the function of neurotransmitters results the concentration power. And apart from it, it helps to reduce the forgetfulness. हम अक्सर बेशतर भूलते हैं। भूलने का कारण ये भी होता है कि जब हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मली फंक्शन नहीं करते हैं, तो इसीलिए हेल्थी एक्सरसाइज की ज़रूरत है ताकि न्यूरोट्रांसमीटर्स नॉर्मली फंक्शन करेंगे और इट विल फाइनली रिड्यूस द फॉरगेटफुलनेस। द न्यूरोट्रांसमीटर्स आल्सो प्लेड इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल बिकॉज इट आल्सो reduces and controls the stress. Dear students, according to the neuroscientists, physical activity is the best medicine to maintain the brain health. यानी कि brain health जो है it depends upon the physical exercise. There is a global consensus among the neuroscientists. Number 4, peer group relationship. Dear students, peer group relationship promotes the emotional climate. अगर बच्चों के दरमियान या लर्नर्स के दरमियान अच्छी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी तो डायरेक्टली उनकी लर्निंग पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्फ्लिक्ट, एग्रेशन एंड द गैप विच इज एग्जिस्टिंग among the peers, it finally results increase of stress, anxiety and isolation. और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए we have to promote the healthy relationship among the peers so that we cannot promote only the learning of the learner but also promote the overall psychological well-beingness like physical, mental, social, emotional as well. These were all the factors, I mean to say you environmental factors, which influences the learning of the learner. If you really enjoyed the lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.